तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. लास्ट टाइम हमने शुरू किया था something about the what we call geodesics. So on the surface, geodesics are curves. If you have a surface R is equal to R H U V, and I have a curve. Say alpha at T on this surface where the parameter could be T. So I've got a surface and I've got a curve. Now at each point अगर हमारे पास ऐसा हो कि या तो अल्फा का जो डबल डेरिवेटिव हो या इसका जो कर्वेचर वेक्टर कह लो, अगर ये 0 है for all t और alpha double t is perpendicular to the tangent plane at each point. तो यहाँ पर हर पॉइंट पे एक tangent plane होगा. अगर ये जो इसका कर्वेचर वेक्टर है या तो 0 है या perpendicular है to this tangent plane, या सेम कह सकते हैं कि अल्फा डबल डॉट टी जो है इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर है is parallel to the surface normal at each point on this curve. इसका कर्वेचर वेक्टर और n है या जो सरफेस नॉर्मल है, अगर वो पैरेलल है तो हम कहते हैं ये जो अल्फा है इट्स अ जियोडेसिक. एंड ऑफ कोर्स प्लेन में स्ट्रेट लाइंस जियोडेसिक्स होती है क्योंकि अल्फा डबल डॉट जो है वो 0 होता है फॉर एनी स्ट्रेट लाइन, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है. और ऑफ कोर्स इट आल्सो जनरलाइजेस द आइडिया ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन अ सरफेस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन अ प्लेन. बट अगर तुम्हारी ऑब्वियसली सरफेस जैसे स्फीयर हो या कुछ और हो तो वहां पे स्ट्रेट लाइन यू कैन नॉट ड्रॉ एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन, सो यू विल हैव अ कर्व लाइक दिस. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगी वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी क्योंकि वहां पे स्ट्रेट लाइन तो आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते विद इन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या जो जियोडेसिक होगी दैट वुड बी द ग्रेट सर्कल, मतलब ग्रेट सर्कल का हिस्सा कोई. अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ पॉइंट चाहिए, if you draw a great circle through these 2 points, it would be a geodesic. It would be the distance such that alpha double dot t would be parallel to the surface normal at that point. Then we showed that something called geodesic curvature. And it was obvious. It's rather obvious if I take the tangent vector on a surface, on a unit split surface, then the surface normal and of course n cross alpha dot, this forms a basis and they are mutually perpendicular unit vectors at a point on a curve, or using this as my what you call using this as my reference system at a point on a curve on a surface, then I can write the curvature of the curve as I can resolve it into 2 parts जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में किया था. You could write it as kn plus kg n cross alpha dot. So we call this, of course, this is the normal curvature because this is not k, this is basically r double dot, the curvature vector. And you have to remember, if it is a unit speed curve, then k is exactly equal to mod of r double dot, which would give us that the curvature square, curvature of the curve is actually the curvature of the curve का जो normal component है और component along n cross alpha dot. And then इसको हमने कहा geodesic curvature और इसको normal curvature. So we also showed that I think a curve is a curve on a surface. Once we resolve the curvature vector of that curve, I should write alpha dot, I think. Yeah. Right, it's alpha dot, not k dot. Alpha double dot. The curvature. Oh, alpha double dot. Okay. The curve on a surface is a geodesic, जो कि हमने किया था, if and only if this k sub g is equal to 0.
सो ये हमने एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट किया था। उसके बाद हमने बताया ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि नॉर्मल सेक्शंस जो हैं ऑन अ सरफेस दे आर ऑलवेज जियोडेसिक्स. Normal sections are geodesics. Okay, so we move ahead to what we call geodesic equations. It's a characterization. Now, how we can check whether a curve on a surface is a geodesic. Of course, this is definition से तो है ही, लेकिन there are two differential equations if they are satisfied, मतलब equivalently. If the geodesic equations are satisfied, which are two differential equations, then the curve must be a geodesic. So let's do that. Geodesic equations. यहाँ तक हम पहुँच गए थे. Geodesic equations ये होती हैं. Let me write down this theorem. A curve alpha on a surface S is a geodesic if and only if for the curve, for this curve, alpha t is equal to r at u of t, v of t. The following equations are satisfied. And those equations are one, these are two differential equations. One is d by dt of eu dot plus fv dot is equal to 1 by 2 of e sub u dot square plus twice f sub u dot v dot plus g sub v dot square. और दूसरी इक्वेशन है इसी की d by dt of fu dot plus gv dot is equal to 1 by 2 e sub v u dot square plus twice f sub v u dot v dot plus g sub v dot square. अगर ये दो equations hold करती हैं, then the curves is a geodesic and the conversely also. So these differential equations are called geodesic equations. Using the definition of the geodesics, it's easy to actually deduce that this result, this condition. Proof इसका rather easy है, वो ये. Now suppose R sub u जो कि होती है suppose we choose R sub RUV as a basis for the tangent plane. Suppose it is a basis, so suppose we choose as the basis for the tangent plane of the surface R is equal to R at UV and alpha is geodesic. Yeah, unit law. Let me write it. 10. Then the curve alpha is a geodesic if and only if, जो कि इसकी definition है, is a geodesic on the surface R is equal to RHUV
if and only if alpha double dot is perpendicular to the tangent plane, which means तो tangent plane को perpendicular है तो RU को भी perpendicular होगी, RV को भी perpendicular होगी। अब हम लिखेंगे वही alpha double dot is perpendicular to R sub U and R sub V। अब वो alpha double dot अगर 0 है फिर तो वो हर चीज को perpendicular है, यानी वो हम मतलब लिखते ही नहीं। So alpha now alpha at t जो है, let me write, alpha at t is equal to R at ut vt, or using the chain rule alpha dot t जो है वो है t by dt of alpha at t, which will be the same thing as d by dt of this R at ut vt, and using the chain rule, so it would be del R by del U du dt plus del R by del V into dV by dt, जिसको मैं लिख सकता हूँ, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा इसी को, अल्फा डॉट एट t is equal to R sub U dot plus R sub V dot, right? Okay, so alpha would be alpha will be a geodesic if and only if d by dt, yeah, you only flow alpha double dot t dot R sub U is equal to 0 and alpha double dot t dot product with R sub V is equal to 0. That is, इसी को मैं लिख सकता हूँ d by dt of alpha dot t dotted with R sub U is equal to 0 and d by dt of alpha dot t dot product with R sub V is equal to 0. Then we can substitute this alpha dot t in these equations, so that is, which implies that which is equivalent to d by dt of R sub U dot plus R sub V dot dotted with R sub U is equal to 0 and d by dt of R sub U dot plus R sub V multiplied by V dot dotted with R sub V is equal to 0. Now what we do, let's call this set of equations 1. We show that these two equations are equivalent to the geodesic equations. चलो लिख भी देते हैं. We show that these two equations are equivalent, जो हमने theorem में लिखी है, geodesic equations are equivalent to the geodesic equations. Okay. So इसकी पहली पकड़ेंगे तो उससे हमें पहली जियोडेसिक इक्वेशन मिलेगी, इसी तरह से इसकी दूसरी इक्वेशन लेंगे, मतलब जियोडेसिक इक्वेशन का मेरा मतलब है ये, इस पहली इक्वेशन से हम मतलब इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन, द सेकंड वन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन. So that's what we are going to do. Okay. Now left hand side ऐसे मैं लिखूंगा of the first equation of 1. तो जो मैंने 1 लिखा है, इसकी जो पहली इक्वेशन है, इसका मैं दिखाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड अगर है वो उसको हम थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं. How I show it? What I do, I write it like this. देखो ये डेरिवेटिव एक का है डॉट प्रोडक्ट विद RU. तो if I write
इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, how should I write it? Using the product rule, मतलब मेरे कहने का मतलब है मैं लिखूंगा d by dt of ru u dot plus rv v dot dotted with r sub u minus r sub u dot plus r sub v dot, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, dot product with d by dt of r sub u, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसके बराबर है, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट रूल लूंगा तो वो होगा सम इन दोनों का, तो इसका मतलब अगर ये इस और इस इन दोनों का सम है तो देन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, इज जस्ट द प्रोडक्ट रूल, एक को ऐसे रखा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, सो बिकॉज दिस प्लस दिस, ये जो यहाँ पे है और ये जो यहाँ पे, इन दोनों का सम ये है, इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, इट इज जस्ट द प्रोडक्ट रूल। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट है, लेकिन मैं लिखूंगा ये अगले पेज में कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं d by dt of r sub u dot plus r sub v dot product with r sub u minus, of course, r sub u dot plus r sub v dot multiplied by d by dt of r sub u। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और हमें पता है ये 0 के बराबर है by equation 1, but that would be the same as d by dt of, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो you will be r u dot ru, so that would be just e u dot plus ru dot rv, that would be f v dot यहाँ पे minus, this would be of course यहाँ पे हमारे पास है ru u dot plus r sub v dot into d by dt of ru, तो यहाँ पर फिर से चेन रूल लगेगा, यानी डॉट प्रोडक्ट विद, यहाँ जो चेन रूल लगेगा वो होगा del by del u r sub u into du by dt plus del by del v of r sub u into dv by dt. So that can be further written as d by dt of eu dot plus fv dot minus r sub u dot plus r sub v dot product with, this would be r sub u of course u dot plus r sub v dot, अब dot product लगाएंगे, so this would be equal to d by dt of e sub u fv dot r sub u, अब अगर इसका हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, so you can write it as, कैसे लिखेंगे, ओके इसका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो लेट्स सी, तो पहले आएगा हमारा आर यू डॉट आर यू यू इंटू यू डॉट स्क्वायर प्लस आर वी dot r u u dot v dot, then I have r u dot product with r u dot v dot plus of course r v dot r u v multiplied by v dot square. So this is what I have. So now इसको अगर थोड़ा हम जमा करें सेम टर्म्स को, तो I've got RV RUU, यहाँ है RV RUV, नहीं यहाँ अगर इसको कॉमन निकालना है, चलो यहीं पे निकालते हैं, नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट लाइन में के बजाय हम इसको U dot V dot को यहाँ कॉमन निकालेंगे. Let me write it like this, U dot, ठीक है, और बाकी ये सब है. Okay. So इसको थोड़ा लॉन्ग ब्रैकेट लगाते हैं to avoid confusion. Okay, so this is what we have. Now
E is equal to हमें पता है RU dot RU, इसका मतलब E sub U जो है, जो इससे पहले हम कर चुके हैं किसी जगह, यहाँ पर भी कर सकते हैं. It would be twice RU dot RUU, यानी RU dot RUU जो है, that would be 1/2 E sub U. Okay. इसी तरह से ओके F किसके बराबर है? F is equal to RU dot RV. अगर मैं F sub U निकालना चाहूँ, वो बनेगा RUU dot RV plus I have R sub U dot R sub UV. अगर तुम यहाँ देखोगे, ये it is something like same, है ना, सिमिलर है कुछ. इसी तरह से this is the 1/2 EU. इसी तरह से G जो है बराबर RV dot RV के G sub U होगा, it would be RUV dot RV plus R क्या था, ऐसे नहीं होगा, यानी twice this thing. Actually होना चाहिए RVU, RUV या VU एक ही बात है, ठीक है. यानी इसको मैं यहीं पे लिखना चाहूँगा, यानी RUV dot RV जो है, dot product is commutative, it is equal to 1/2 G sub U. यानी हम तीनों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी इसकी जगह 1/2 G sub U, इसकी जगह 1/2 F sub V और इसकी जगह simply F sub U. Now substituting these values we get left hand side of first equation of 1 is, we should get क्या मिलना चाहिए हमें, d by dt of should be equal to d by dt of E U dot plus F V dot minus, I should write it like this, 1/2 E sub U U dot square, 1/2 E sub U U dot square plus F sub U U dot V dot plus 1/2 G sub U V dot square. ठीक है. ओके, हेंस क्योंकि राइट हैंड साइड तो इसका 0 है, हेंस फर्स्ट इक्वेशन of 1 is equivalent to d by dt E sub U dot FV dot is equal to 1/2 कॉमन निकालेंगे, E sub U U dot square plus twice F sub U U dot V dot plus G sub U V dot square. Of course, which is the first geodesic equation, which is the first geodesic equation. Similarly, ये मैं तुम पे छोड़ूंगा सेकंड पार्ट. Similarly, left hand side वैसे ही करना है तुम्हें of second equation of 1, वो क्या था, जा सकते हैं वहां. तो दिस इज द, ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आरवी के साथ है, यानी यू कैन राइट इट एज, जैसे कि यहाँ हमने किया था, it would be d by dt is equal to d by dt of क्या था ये, r sub u dot plus r sub v dot whole dotted with r sub v minus
माइनस होगा आर सब यू यू डॉट प्लस आर सब वी डॉट प्रोडक्ट विद डी बाई डी टी ऑफ आर सब वी। और मैं चाहूंगा तुम ये जो हमने इसमें प्रोसेस फॉलो किया बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉलो करना है एंड यू विल गेट द सेकंड इक्वेशन ऑफ द जियोडेसिक्स। ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें डू इट योरसेल्फ एज अ होम असाइनमेंट। और तुम्हारा एग्जाम भी जल्दी आने वाला है तो उसके लिए भी तुम प्रिपरेशन शुरू करो। और आई थिंक कब होगा हमारा एग्जाम? अंदाजा होगा एंडिंग अगस्त। तो पहले 6 सेम का होगा? पहले हमारा 6 सेम का होगा? मिक्स होगा मतलब। अच्छा, तुम्हारा वो पुराना वाला सेम? हाँ सर, वो भी है ना पेंडिंग? नहीं, पहले यही होगा, पहले यही होगा। ठीक है जी सर। तो इसको तुम आगे एक्सपेंड करके तुम्हें वो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, नाउ तुम्हारा होम असाइनमेंट, ये भी होम असाइनमेंट भी अब प्रिपेयर करना शुरू कर दो। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for the curve, मतलब पैरामीट्रिक कर्व v इक्वल टू कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट। अगर कोई ऐसी कर्व है जहां पे मतलब विच इज पैरामीट्रिक कर्व v कर्व टू बी ए जियोडेसिक, ये जियोडेसिक हो सकती है अगर मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इज e f नहीं e sub v minus twice f e sub u minus twice e f u is equal to 0। तो ये एक होगा। इसी तरह से यू कुड हैव मतलब u इक्वल टू c, अगर जियोडेसिक, ये तो v इक्वल टू कांस्टेंट में एक पैरामीट्रिक कर्व, ये दूसरी पैरामीट्रिक कर्व होगी। ये दूसरा होम असाइनमेंट हो सकता है कि इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि g सब u प्लस f g v माइनस ट्वाइस g f सब v इज इक्वल टू 0। ये तभी होगी जियोडेसिक जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, इफ एंड ओनली इफ, और यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। राइट, ठीक है, मतलब ये तुम दोनों करोगे कि ये जियोडेसिक कर्व है अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ। इसी तरह से u इक्वल टू c, द अनदर पैरामीट्रिक कर्व वुड बी जियोडेसिक इफ दिस इज द केस। ओके, नाउ वी कम to proving that actually जो geodesics on a unit sphere है वो great circles ही है। मतलब एक तो हुआ कहना, दूसरा हुआ we prove it by means of using these geodesic equations। Okay, so let's do it as a geodesics on a unit sphere। Now the unit sphere is given by इसकी जो इक्वेशन है which is a surface of revolution, हमने इससे पहले भी किया था। You have r at uv is equal to cos u cos v sin u cos v, या cos u sin v वो भी चलेगा, cos u sin v and sin u। अब ये है कि यहाँ जो पैरामीटर है u and v है, and u जो है that lies between 0 and pi, and v जो है that lies between 0 and 2 pi। So हम सेमी सर्कल को रोटेट कर रहे हैं तो we get a sphere। तो यूनिट स्फीयर मींस इसकी रेडियस 1 है क्योंकि यहाँ पे
कभी कभी मतलब कुछ बुक्स में उन्होंने u के लिए यूज किया होगा पैरामीटर थीटा और v के लिए फाई किया होगा। सो यू नीड नॉट, मतलब जस्ट अ नोटेशन। यूजुअली थीटा एंड फाई ही यूज करते हैं, लेकिन मैं चूंकि हम uv यूज कर रहे हैं तो पैरामीटर्स के लिए, तो यहाँ पर भी आई प्रेफर uv ही रहे। ठीक है, सो यू कैन सी दैट okay, we have done this. Now what we have is, अगर हम evaluate करें e को, that would be ru dot ru, और तुम ये करोगे evaluate, तुम ru निकालो तो तुम देखोगे ये जो बराबर है e मिलेगा तुम्हें 1, f मिलेगा तुम्हें which is r sub u dot r sub v, वो होगा 0, और g जो है वो है r sub v dot r sub v, वो बराबर होना चाहिए cos square u। नहीं होगा, इसमें कुछ है नहीं, तुम जस्ट निकाल सकते हो जस्ट आर वी किसके बराबर है। आर वी किसके बराबर है, v के साथ डिफरेंशिएट करो पार्शियली, सो ये बन जाएगा cos u माइनस sin v, राइट। देन यू हैव व्हाट, cos u cos v, और यहाँ पे 0। अब इसका मॉडुलस लो और उसका स्क्वायर, तो व्हाट यू गेट, नहीं इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, वो होगा cos square u sin square v plus cos square u cos square v plus 0, that would be cos square u common, अंदर बचेगा sin square v plus cos square v, यानी ये होना चाहिए cos square v। तो तुम ये खुद इवैल्यूएट कर सकते हो, तो मैं ऐसे ही लिखा था just for checking कि g must be cos square of u। So we might restrict, क्योंकि हमें पता है कि जो geodesics हैं they are speed, they are curves of constant speed, so we might restrict, क्योंकि जो geodesic होना या ना होना वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अल्फा डबल डॉट टी, और चूंकि अगर कोई geodesic है it has to be of constant speed, therefore what I can assume that it is of speed 1। so उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके geodesic होने या ना होने। we might as well restrict, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, to the unit speed curve। curves alpha dot t equal to, of course क्योंकि surface पे है, we are at ut vt। okay, so that अगर ये यूनिट स्पीड कर्व है तो ये हमें रफ पे यहाँ पे कर सकता हूँ। उसका मतलब ये है कि नॉर्म ऑफ अल्फा डॉट टी इज इक्वल टू 1, लेकिन अल्फा डॉट टी बराबर होगा, it would be just differentiating, so it would be r sub u, जैसा कि हमने इससे पहले किया था, r sub v डॉट। तो अगर इसका लेंथ हम ढूंढना चाहे, पहले हम खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी हम निकालेंगे अल्फा डॉट टी का स्क्वायर, वो होगा इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, अल्फा डॉट टी डॉट प्रोडक्ट अल्फा डॉट टी, तो वो बन जाएगा, as you can see, that will be just e u dot square plus twice f u dot v dot plus g v dot square। और अगर मैं e f g के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो वो बनना चाहिए सिंपली, e तो 1 है तो it should be u dot square, f 0 है so it should be just cos square u v dot square, है ना। अगर मैं यूनिट स्पीड कर्व मान रहा हूँ, इसका मतलब u dot square plus cos square u into v dot square, this must be equal to 1, because I am assuming that alpha की जो स्पीड है वो 1 है, और चूंकि e f g के वैल्यूज ये हैं तो this is what I should have। ठीक है, so now
Now, if alpha dot t alpha t is a geodesic, then by first equation, first geodesic equation, actually first कह लो या दूसरी कह लो, लेकिन we know which one we are calling first here. By that I mean, और लिख देते हैं d by dt of eu dot plus fe dot is equal to 1 by 2 f e sub u dot square plus twice f sub u dot v dot plus g sub u v dot square. तो अगर ये है तो हमें पता है E1 है और F0 है, that is मतलब in our case the geodesic equation would become d by dt of E क्या है 1 है u dot square, so it would be d by dt of f is 0, E is 1, so it should be u dot, खाली बचेगा यहाँ पे left hand side पे, right? Then I have is equal to 1 by 2 E sub u, तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, f तो है ही 0, then you have g sub u, वो किसके बराबर होगा? It would be g sub u होगा twice cos u, I think, what am I writing? So you should basically get, नहीं, I think I should use the first one, क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट वन से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लाई हो जाएगा, तो सेकंड वन से मुझे क्या मिलेगा? सेकंड वन शायद ट्रिवियल होगा, सो इट वुड बी cos sub u into minus sin v, अगर मैं ऐसे में रखूं, हालांकि ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, into v dot square, तो हमें क्या मिलेगा? u double dot is equal to 1 by 2 खत्म, so it would be minus cos u sin v dot square, and I think that would be obvious, क्योंकि अगर मैं यहाँ ले लूं, देखो विच इज मतलब ट्रिवियल, मतलब ये तो सेटिस्फाई होगा ही क्योंकि मैंने यूनिट स्पीड कर दी है, क्योंकि अगर मैं इसको दोनों साइड्स पर डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, तो तुम्हें मिलना चाहिए ट्वाइस u डॉट into u डबल डॉट प्लस what do you have, it would be basically प्रोडक्ट रूल होगा, के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, so it would be twice cos u minus sin u into u dot v dot square, then I would also have plus मैंने ठीक किया, I am differentiating with respect to t, u is a function of t, okay fine, so it would be minus plus cos square u को ऐसे ही रखें, I should have twice v dot into v double dot is equal to 0. So does it correspond to our v dot u dot common आएगा, then this would become this equation, I think. Cos square u में दिक्कत है. Okay. So actually we don't need to check this one for the geodesic equation. It must be unit sphere. Would it be trivially satisfied? मुझे लगता है this is implied by this, वही मैं सोच रहा हूँ, जो हमने यहाँ किया, it is implied by this thing, तो is it implied? क्योंकि यहाँ पे जो मिलेगा,
आई थिंक सेकंड इक्वेशन बाद में करेंगे, पहले को वी वांट टू गेट टू द ग्रेड सर्कल, तो पहले मैं वो दूसरी वाली इक्वेशन को पकड़ता हूँ फर्स्ट के बजाय। पहले लेट्स डू द सेकंड जियोडेसिक इक्वेशन, सो कीप इट एज इट इज, क्योंकि मुझे लगता है पहले हमें ग्रेड सर्कल बता देंगे फिर सेकंड दिखाएंगे, वो भी सेटिस्फाई होती है ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत आ रही है। तो सेकंड इक्वेशन में कुछ ज्यादा अलग नहीं है, ये वर्ड के बी के साथ है और यहाँ पे f है और यहाँ पे g है। So it is fu dot gv dot 1/2 e sub v twice f sub v gv, क्योंकि ये ज्यादा इजी है करना v dot square, क्योंकि अब अगर मैं यही चीज सब्स्टिट्यूट करूं तो you will get d by dt of f is 0, so g is cos square u v dot is equal to, यहाँ पे सारे जीरो आएंगे उसी वजह से, so because this becomes 1/2 0, f sub v भी 0 है क्योंकि वो 0 है, और चूंकि ये फंक्शन इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन u and we are independent, so this would also be 0. That is जो पहली जियोडेसिक इक्वेशन मेरी होगी या सेकंड जियोडेसिक इक्वेशन, तो that would be just d by dt of v dot cos square u is equal to 0. So which implies that v dot cos square u must be some constant. उसका नाम हमने ओमेगा रख दिया। तो अगर वो कांस्टेंट है, अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कांस्टेंट 0 है या वो नॉन 0। सो इफ इट इज 0, इफ ओमेगा इज 0, then it implies that जो v dot है वो 0 होगा, क्या होगा, v dot must be 0। तो v dot चूंकि cos square u 0 नहीं हो सकता, because that means g is 0। g is 0 का मतलब rv is equal to 0, और rv 0 नहीं हो सकता because it's a regular curve, no, by assumption rv 0 नहीं हो सकता, तो फिर g भी 0 नहीं हो सकता, which means cos square u भी 0 नहीं हो सकता, so therefore v dot must be 0। तो because g equal to is not equal to 0, so v dot must be 0, which means v must be constant, which means that v is equal to constant। अब v constant होने का मतलब it is a meridian, which implies that it's मतलब because v constant होने का मतलब हुआ v होता है along this curve constant जब हम surface of revolution बनाते, तो which is always part of a great circle on the sphere, because it is part of the generating curve। generating curve हमारा होता है, उसकी रेडियस वही होगी जो स्फीयर की रेडियस होगी, तो which implies that alpha अगर v constant है, alpha must be part of a meridian which is part of a great circle, which is part of a great circle। तो पहला तो ये है कि अगर इस केस में it must be a part of great circle, जो कि हम प्रूव करना चाहते हैं, any geodesic would be part of some great circle, the circle with the same radius as that of the sphere। Now suppose दूसरा केस क्या होगा, अगर ओमेगा नॉन जीरो है, then by unit speed parameterization जो हमने यहाँ किया था, now this is equal to 1, so then by unit speed parameterization, कहाँ जा रहा हूँ, okay, then by unit speed parameterization unit speed parameterization क्या है, let me write it down। unit speed parameterization थी हमारी, it was u dot square plus cos square u into v dot square is equal to 1, और ये true है, and furthermore I've got that क्या था मेरा, I've got v dot into cos square u जो है वो ओमेगा है, इन दोनों को अगर मैं जो मेरी जियोडेसिक इक्वेशन ये है, I would get
u dot square is equal to 1 minus omega square divided by cos square u, क्योंकि as you can see हमारा जो कहाँ गया, हाँ, अगर ये ओमेगा के बराबर है इसका मतलब cos स्क्वायर u जो है वो है बराबर ओमेगा, या ऐसे यहाँ लिखते हैं, तो अगर हम इधर निकालें u डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर u इंटू v डॉट स्क्वायर, लेकिन v डॉट स्क्वायर बराबर है ओमेगा बाई v डॉट है बराबर ओमेगा बाई cos स्क्वायर u, तो उसका स्क्वायर होगा ओमेगा स्क्वायर बाई cos स्क्वायर 4, so this would be actually 1 minus omega square divided by cos square u. So इन दोनों को मिला के एक तो अपनी जियोडेसिक इक्वेशन, दूसरा अपनी जो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है, this is what we should get. So in that case, along a geodesic we must have I should have I write it like this. Now this is basically u है मेरा, this is u by t है ना, so अगर मैं लिखूं ऐसे dv by du का whole square would be equal to dv by dt divided by du by dt का whole square, which is the same thing as v dot square by u dot square. ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, let's see. अगर मैं पीछे जाऊंगा, ओ ये क्या हो गया, ये मैं इतने पेजेस आगे कैसे आ गया, ये सीधे नेक्स्ट पे चला जाता है कि क्या हो रहा है, ओके, अरे इतने पेजेस नहीं चाहिए मुझे, चलो मैं लिख देता हूँ पहले इसको. So along with geodesic we must have, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, लेकिन ये 10वें पेज पे क्यों जा रहा है, ठीक है. So you must have dv by du का स्क्वायर is equal to, अब मैं सीधे यहाँ लिखता हूँ u dot square by v dot square. So that would be u dot square by v dot square. We already have u dot square is equal to 1 minus omega square divided by cos square u, जो हमारा ये था, yes, और v dot square बराबर है, v dot square किसके बराबर है, okay, so I got this thing, लेकिन मैं इसको थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, चलो यहाँ रफ करते हैं. अगर u dot square इसके बराबर है, then you can write it as कैसे, कि इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, cos square u minus omega square divided by cos square u, which I can write as, चलो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये से थोड़ा ऐसे गड़बड़ हो जाती है, cos square u into omega square minus 2 into cos square u minus 1. अब एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि मेरे नोट्स में मैंने यूज किया उस टाइम थीटा एंड फाई, और मैं इसको यूवी में कन्वर्ट कर, ओके, एनीवे देखो ये इसके बराबर होगा, बिकॉज ये इसके बराबर है. व्हाई, बिकॉज 1 by cos square u into 1 by omega raised power minus 2 cos square u minus 1 is the same thing as omega square से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा omega square into cos square u into cos square u minus omega square, वो मिलेगा हमें, हम लिख सकते हैं ऐसे, omega square divided by cos square u whole divided by 1 minus omega square by cos square u. It is the same thing. तो इसको लेंगे ऊपर, तो यहाँ बन जाएगा 1 minus cos square, मतलब इससे डिवाइड किया
cos square u से throughout. So this is what you will get. So yes, तो माइनस था यहाँ, तो just a minute, मैंने क्या लिखा, हाँ यहाँ मैंने cos square, ठीक है. So बिल्कुल सही है, ये इसके बराबर है, which is the same thing as नीचे वाला जो है that is just u dot square, और ऊपर वाला जो है वो है u dot square, because u v dot is equal to omega by cos u, जैसा कि है from this v dot square would be omega square by cos square u. तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मुझे थोड़ा सा लग रहा है you should have cos square 4 यहाँ पे, है ना. यस, क्योंकि 1 है यहाँ पे तभी आएगा जब मैं cos square 4 से डिवाइड करूंगा, और cos square 4 से डिवाइड करूंगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिकॉज u डॉट स्क्वायर ये है और v डॉट बराबर होता है ओमेगा बाई cos स्क्वायर. तो उससे हमें मिलेगा u डॉट स्क्वायर बाई v डॉट स्क्वायर इसके बराबर हो गए. वी वांट टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन समहाउ, सो दैट्स द आइडिया बेसिकली. तो हेंस अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, you will have dv by du, taking the square root and integrating, तो यहाँ से plus minus 1 integrating with respect to u should be equal to integral du cos square u omega minus u cos square u minus 1. So that can be written as du divided by एक ही चीज क्योंकि मैं स्क्वायर रूट ले चुका हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, I'm taking square root then integrating. So वो बन जाएगा cos of u को हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा ओमेगा माइनस 2 cos square u minus 1, जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल du by cos u, right, into I can write cos u से डिवाइड करते हैं तो वो बाहर आ जाएगा. So you will get, let me write it like this, ऐसे लिखें, ओके ओके ओके, ऐसे लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ओमेगा माइनस स्क्वायर, तो cos स्क्वायर u यहाँ पे है, cos u इधर है. अगर मैं इसको 1 by cos से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई करूं, हाँ ठीक वही है, मैं इसको cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय cos u करूंगा. अब उससे क्या होगा, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस cos u को मैं अंदर ले जाऊंगा तो वहां पे वो बन जाएगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर u by cos स्क्वायर u minus 1 माइनस cos स्क्वायर u, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सॉरी गलत डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इट शुड बी 1 by cos स्क्वायर. तुम घर पे भी चेक कर सकते हो, यानी ये बनना चाहिए du divided by cos square u omega raised to minus 2 माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड यू शुड गेट secant स्क्वायर. अब इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें, just substitute say s equal to tan of u. So putting s equal to tan of u on the right hand side, putting say s equal to tan of u, so you will have ds is equal to secant square u du, and you will get हमारा इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रल dv, क्योंकि यहाँ पे जो है कहाँ गया, क्या हो रहा है इसमें, ओके इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट किया, मैंने सब्स्टिट्यूट किया s is equal to tan of u, so that ds is equal to
secant square u du. So we will get integral dv dv, du cancel, plus minus is equal to, should I write it, integral of ds. I've got, यहाँ पे यानी I can write, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, चलो ds is equal to 1 by cos square u du. फिर ये ds में जो इंटीग्रल बनेगा du by cos square u यहाँ पे है ना, du by cos square u है अपना ds, so it should be ds divided by omega raised for -2. Now the question is what should be secant square, है ना? हमें पता है 1 plus tan square u is equal to secant square u, तो it should be secant square u की जगह आना चाहिए 1, ये ठीक है ना, 1 plus tan is secant, right? तो secant square u बराबर होना चाहिए 1 plus s square. So I should have here -1 plus s square. तो अब ठीक हो गया. So that is of the form, as you can see, इसके बराबर है ये 1 minus s square. तो it is basically, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ds बेटर है कि हम इसको लिखिए ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस यहाँ है -s स्क्वायर, क्योंकि s है अपना वेरिएबल. अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे इट इज लाइक dx by root of a square minus x square, वो होता है sin inverse of x by a, यानी ये होना चाहिए sin inverse of x की जगह s है, और ये क्या होता है, इससे बड़ा टाइम लिया. इट इज sin inverse of s by a की जगह होना चाहिए square root of omega raised for -2 -1. Okay, so using, this should be some v minus v naught, where v naught से क्या बोलते हैं, प्लस माइनस यहाँ आना चाहिए. So because v naught is just the integration constant, dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v और साथ में एक कांस्टेंट है जिसको हमने v naught का, और राइट हैंड साइड should be like this. So this means that अगर मैं साइन लगा दूं दोनों साइड्स पे, I should have s by omega raised for -2 -1 should be equal to sin of course यहाँ प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, because sin of plus is sin of minus is minus sin x, v minus v naught, where v naught is constant. लेकिन s है tan u के बराबर, तो it implies that tan of u जो है वो बराबर होना चाहिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा रेज पर -2 -1 into sin of v minus v naught. तो ये u and v में ये रिलेशन होनी चाहिए if it is geodesic, जो हमने अब तक किया. So therefore हमें पता है now स्फीयर पे जो x है, x कोऑर्डिनेट वो है बराबर cos u cos v, और y है बराबर जो हमने लिया है sin u cos v, and z है बराबर of course sin of u. So मैं लिख सकता हूँ, मतलब therefore the coordinates जो कि ये हैं, because it lies on the sphere of the geodesic must satisfy, क्योंकि u और v के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है ना, tan of u is equal to this thing. So therefore these must satisfy z is equal to ax plus by, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, where a is a constant, यानी a जो है वो है प्लस माइनस या माइनस प्लस
दो साइन आएंगी, ओमेगा रेज टू पावर -2 -1 sin of v naught, and b must be a constant plus minus omega raised power -1 cos of v naught. और वो मैं अभी बताऊंगा कैसे. Why? Because z is equal to axp. तो अगर मैं यहाँ ये सब्स्टिट्यूट करूं तो I should get this thing. वो ऐसे, because जो मेरा tan of theta है, tan of u है, तो किसके बराबर है? Tan of u is equal to plus minus root of omega -2 -1 sin of v minus v naught. और अगर मैं इसको साइन का फॉर्मूला लगा दूं, ये बन जाएगा प्लस माइनस root of omega -2 -1. I should have here sin v cos v naught minus cos v sin v naught. यही होना चाहिए ना, यही है फॉर्मूला. और I can write then this as sin u by cos u. इसका मतलब sin u बराबर होना चाहिए प्लस माइनस omega raised power -2 -1. I should have cos of v naught. इसको यहाँ लाते हैं, it should be cos u sin v, then plus minus चेंज होगा माइनस प्लस में, और यहाँ पे आना चाहिए of course square root of -2 cos -1 into sin of v naught. Then I should have cos v sin of u. अगर तुम इसको नाम दोगे cos u, ये क्या है? ये तो x कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है? ये तो z कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, और ये यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है. sin v या क्या cos v sin v, हाँ तो यहाँ sin u है, नहीं sin v sin. So it is, मैंने क्या लिखा? cos v sin u. मैंने क्या लिखा? मैंने गलत तो नहीं लिखा. x किसके बराबर है? कोऑर्डिनेट्स कहाँ गए? x is equal to sin होना चाहिए. मैंने गलत किया यहाँ पे. It has to be क्या आना चाहिए? cos u cos v. यहाँ पे cos u cos v, क्योंकि cos यहाँ से आ गया, cos v इधर है. It is cos u cos v, और ये है cos u sin v. It is cos u sin v. ठीक है, यहाँ cos u है. ये गड़बड़ हो गई है. y कोऑर्डिनेट क्या है? इट इज sin v cos u. ठीक है, अब सही. ये है यहाँ पे cos v. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इसका नाम देता हूँ a और इसका नाम b, so this is actually dy ax is equal to z. Okay, now leaving that aside, now this is the equation of a plane passing through the origin. So agar, so therefore the geodesic on the unit sphere must pass, must lie on z is equal to ax plus by, which is a plane passing through the origin. In any case, taking both the signs. तो इसका मतलब क्या हुआ? I have got a sphere, उस पे एक curve है, but which is of unit radius. ठीक है ना, ये sphere है इस तरह से. अब कह रहे हैं एक curve है which lies on also on the plane passing through the origin. अगर ये curve plane पे भी lie करती है जो origin में pass होता है, और इस sphere पे भी lie करती है, ये तभी हो सकता है. Hence, alpha must be part of the great circle. थोड़ा सा लंबा चौड़ा, but we have to do it. So अब वही बात वो दूसरी की. As for the first equation, क्योंकि वो
as for the first equation of the geodesic, क्योंकि इससे हमें आराम मतलब इससे एक्चुअल कंडीशन मिलती है, दूसरा तो मुझे लगता है ट्रिवियली सैटिस्फाई होगा। यानी वो कौन सी इक्वेशन थी, d by dt of EU dot plus FB dot is equal to 1 by 2 E sub U dot square plus twice FU U dot V dot plus G sub U V dot square. We should get, I think ये 1 है, ये 0 है, it should just U double dot, or rather d by dt of U dot should be equal to d by dt of, it is 1 by 2, E क्या था, E is 1, तो मैं करूँगा F is 0, और G जो है वो है cos square of U. So it is just d by du of cos square of U, right? क्योंकि G is cos square of U into V dot square, जो कि बराबर है minus twice cos U sin U V dot square. This is our geodesic equation. And since, so which is equal to minus twice cos U sin U V dot square. Or by unit speed parameterization, we have U dot square plus cos square U V dot square is equal to 1. I can substitute in place of V dot square 1 by U dot square. I think कैसे बराबर होना चाहिए? V dot square, so it is cos square U into V dot square is equal to 1 minus U dot square. So V dot square is 1 minus U dot square divided by cos square U. So that is 1 minus U dot square divided by cos square U. यानी वो बराबर होना चाहिए minus twice, इसके बराबर एक cos U इसके साथ खत्म, so minus 2 into, I should have cos U खत्म एक, so it should be sin U by cos U, that is tan U, twice tan U into 1 minus U dot square. यानी I should have U double dot should be equal to yeah. Sorry. Okay, you should have U double dot is equal to tan U, चलो मैं लिखता हूँ twice tan U into, I should write U dot square minus 1. Okay, so what does that mean? कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना है हमें, क्योंकि इसमें खाली U इन्वॉल्व है और T इन्वॉल्व है, so we can just integrate with respect to T, or I can write it as what should I get? U double dot is equal, but this should always hold, यानी tan of U बराबर है U double dot divided by twice U dot square minus 1, something like that. So अगर मैं with respect to T इसको integrate करता हूँ, I think let's do it at 2 o'clock. भी मुझे लगता है काफी हो गया आज के लिए, इसको हम बाद में कंटिन्यू करें। अभी तक हमें मिला कि ये ग्रेड सर्कल ही होगा। Now the question is, जो second geodesic equation है उसका क्या होगा? Let's leave it here. We will do it later. 2 बजे है ना हमारी दूसरी क्लास? हाँ सर 2 बजे। Okay.